हेलो एंड वेलकम टू योर डिजिटल क्लासरूम स्टडी विद सुधीर। स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टी सुधीर और आज हम नजर डालेंगे ज्योग्राफी के एक चैप्टर पर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। इसको हम दो भागों में करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डिटेलिंग है, किस तरह के प्रिमिटिव मेथड्स का उपयोग किया जाता था इरिगेशन के लिए और किस तरह के मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको हम दो भागों में करेंगे। पहले वी विल स्टडी अबाउट द प्रिमिटिव मेथड्स एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल रीड अबाउट द study about the modern method. So before I start, you need to subscribe to the channel, also like and share this video with as many of your classmates and friends, because the idea is to reach as many people as students as possible so that maximum number of students can actually benefit from all the video lessons that we are putting out on Study with Sudhir for the ICSE students in particular who are appearing for the class 10 examination which starts in the last week of February. So शुरू करने से पहले बेसिक्स समझ लेते हैं कि सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इरिगेशन, वाइज इरिगेशन सो इम्पॉर्टेंट। नाउ इंडिया बेसिकली एक कृषि प्रधान देश है। इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ईदर एज लैंडेड फार्मर्स और एज पीपल हु टेक इट ऑन रेंट, हु आर नोन एज द टेंटेड फार्मर्स, पीपल हु टेक इट ऑन रेंट, and they actually, the tenant farmers, sorry, and they actually use the fields for agriculture. Also there are a whole lot of people who are engaged in the process of farm labor as well. Now फॉर सक्सेसफुल इरिगेशन, अगर कृषि को सफल बनाना है तो उसके लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है, पानी की बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। सो इन व्हाट आर द थ्री डिफरेंट वेज इन विच वाटर इज रियली अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड इन जनरल। वन ऑफ कोर्स इज रेनफॉल। जहां पर भी बारिश होगी, वर्षा होगी, वहां पर एक तरह से पानी की किल्लत नहीं होगी, देयर वोंट बी एनी शॉर्टेज ऑफ वाटर। द अदर इज थ्रू ग्राउंड वाटर। नाउ व्हाट इज ग्राउंड वाटर? नाउ वाटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ मोर देन 15 meters is known as groundwater. That's a basic definition. 15 meters से ज्यादा के डेप्थ में अगर पानी को निकाला जाए तो उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है। The third method is especially found in states like Kerala, where there are backwaters or what are called as lagoons, especially places near Kochi, which is in central Kerala. तो वहाँ पर backwater से भी एक तरह से पानी का प्रावधान किया जाता है। Now let's understand why is irrigation so important to India's agriculture. What are the various reasons why the water availability of water is so important? One of course is because of the uneven distribution of rain, जिसकी वजह से सिंचाई permanent arrangement of water becomes so important. Irrigation is essentially a permanent arrangement of water because rainfall is obviously erratic. Sometimes at the beginning of the monsoon itself, the Met department comes out and announces that इस साल monsoon इतने प्रतिशत कम रहेगा, there will be a deficit rainfall. Sometimes they predict an almost normal rainfall. कभी कभी होता है that it hits the Kerala coast at the right time, but somehow it kind of gets into obstacles somewhere near Maharashtra and then it does not proceed towards the north. So all kinds of obstacles happen, because of which sometimes there is a deficit rainfall in some parts of the country. Overall, the country may face an average normal rainfall, but there will be pockets where there will be deficit rainfall. So essentially because of uneven distribution of rainfall, especially because even theoretically the average distribution of rainfall in India is about 110 centimeters. But places like West Bengal, places like Assam, some places in the northeast, they receive about 150 to 250 centimeter of rainfall. But on the other hand, there are states like Rajasthan which receive even as less as 25 centimeter of rainfall. So there is an uneven distribution of rainfall that necessitates a perennial अरेंजमेंट ऑफ वाटर एंड दैट इज नोन एज इरिगेशन सप्लाई। सो सिंचाई की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई अलग अलग प्रदेशों में एक तरह से अलग अलग किस्म की बारिश होती है। बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के इलाकों में, केरल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन राजस्थान जैसे एक प्रदेश में 25 सेंटीमीटर की ही बारिश होती है। तो एक तरह से इट्स मच लोअर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 110 सेंटीमीटर्स। तो ये तो हो गया प्रमुख और मेन पॉइंट। इसके साथ साथ जो पूरा जो बारिश का जो सीजन है, दैट्स एसेंशियली सीजनल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ मे एंड गोज ऑन टिल द मेन मॉनसून सीजन गोज ऑन टिल अबाउट सितंबर, एंड देन देयर इज अ सेकंड मॉनसून सीजन, द साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन, which starts from the Chennai coast and goes northwards, northeastwards. That essentially happens from September, October onwards till about December. Now
It has a year-long agricultural season, that is India, but India's rainfall is concentrated over a 4-month-long period. जैसे मैंने कहा June, July, August and September, while the rest of the year, the other 8 months are essentially dry as far as in the country is concerned. So only if irrigation is possible, अगर सिंचाई का प्रबंध किया जाए तभी ही मल्टी क्रॉप उगाया जा सकता है पूरे देश में। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ बारिश के महीनों में ही हम खेत को जोएं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस टेक प्लेस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। इट कैनॉट हैपन ओनली ड्यूरिंग द 4 months when the monsoon is hitting India. Then the Indian monsoons, जैसे मैंने पहले कहा, are also uncertain. There is no guarantee that they would really have an even distribution of rainfall and also arrive at the Kerala coast at the right time and spread throughout the country according to the time which is decided, pre-decided. That does not happen. So it's also dependent on a lot of erratic weather conditions. Then जिस तरह के फसलें उगाई जाती हैं पूरे देश में, हर फसल की जरूरत काफी अलग अलग रहती है ना। अभी जैसे देखें पैडी और शुगर केन, गन्ने की बात करें या धान की बात करें, तो उसके लिए काफी पानी की जरूरत होती है। द वाटर इनटेक बाय पैडी एंड शुगर केन इज एनॉर्मस एंड दैट इज ग्रोन इन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, लार्ज पार्ट ऑफ साउथ, इन तमिलनाडु, इन आंध्र प्रदेश। शुगर केन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र एंड इन उत्तर प्रदेश, जहां पर पानी की जरूरत काफी पड़ती है। तो ये जरूरी होता है कि अगर इतनी पानी की जरूरत हो तो दे कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मॉनसून, बिकॉज इफ द मॉनसून फेल्स द एंटायर क्रॉप विल फेल। तो इसलिए लाजमी हो जाता है कि उनको सिंचाई का प्रबंध किया जाए ताकि दोस क्रॉप्स कैन सर्वाइव एंड एक्चुअली द फार्मर्स कैन हीप ए गुड हार्वेस्ट, a rich harvest. Then of course the irrigation is also necessary to extend the frontiers of cultivation into the semi-arid regions. ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां पर बारिश ना हो वहां पर किसी भी तरह की खेती बाड़ी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर वहां के जो किसान हैं वे कुछ ना उगाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज दैट इवन दो यू डोंट हैव ए रेनफॉल, एडिक्वेट रेनफॉल, इन ऑर्डर टू कवर द रेनफॉल डेफिसिट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव proper irrigation facilities. So these are the main reasons why irrigation is so important to India's agricultural operation. India के पूरे जो कृषि का जो पूरा प्रावधान है उसके लिए सिंचाई की इतनी प्रमुख भूमिका है। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन पर, which is the main part of the chapter called water resources. अब methods of irrigation में basically it's divided into two. One is of course the primitive methods, जो कि कई सालों से उस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, the kind of methods that are being adopted. But now India has also started adopting many modern methods which are more which help in conservation of water, wastage of water नहीं होता है, and also it's dependent on the kind of geography which is there in different parts of the country. अभी हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की ज्योग्राफी जो देखें, खासतौर पे तेलंगाना की एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका, जहां पर इट इज मोर रॉकी टेरेन, जिस तरह के सिंचाई के प्रबंध यहां पे होने चाहिए, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम से द काइंड ऑफ इरिगेशन नीड्स ऑफ a state like say Bengal or Assam. So depending on the soil quality, depending on the topography, depending on the geography of the area, the irrigation facilities which are provided will also differ from one place to another. So it's essentially dependent on the topography of the region and this quality of the soil. Now the primitive methods will go first. The three primitive methods which are used are essentially wells, which is essentially what in Hindi you called it kuan. Then of course the tanks. You would have seen, if you have ever gone to a village, I hope all of you have, you would see these large tanks which are built in a village and they take care of the water requirement of the agricultural operations in that village, even sometimes used for drinking water purposes also. And the third are what are called the inundation canals. Okay, we'll come to each one of them one by one. We'll start with the wells. कुएं की बात करते हैं. Okay, now the wells are an age-old method of providing water for agriculture. Okay, wells तो कुएं तो घर घर में भी होते हैं, जिनसे कि जो घर में जो खेती बाड़ी होती है, किचन गार्डन हो या हर खेत में हर घर में किसी ना किसी तरह का छोटा खेत होता है, उसकी भी सुविधा होती है, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ कुएं खेत में भी बनाए जाते हैं और उसके द्वारा भी पानी का प्रबंध किया जाता है, जहां तक उस लोकल खेत का सवाल है। सो एवरीथिंग इज डन इन ए वेरी मैनुअल काइंड ऑफ मैनर. So a hole is dug in the ground to obtain subsoil water and
द वेल्स आर फाउंड ओनली वेयर देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन, परिभाषा मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दी है। वेयर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल, वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल इज नॉट वेरी डीप, बिकॉज द वेल्स कैनॉट बी एक्सट्रीमली डीप, सो द ग्राउंड वाटर हैज टू बी एट a significantly higher level for the wells to be able to tap into that groundwater, and the soil is soft enough to allow the digging of wells. ओके, सो ये जहां पर वहां की जो भूमि है वो एक तरह से थोड़ी नमी वाली जमीन हो, थोड़ी सॉफ्ट हो, वहां पर इस तरह के कुएं डिग करना आसान हो जाता है। ओके, तो ग्राउंड वाटर का लेवल ज्यादा डीप ना हो और वहां की जो भूमि है वे भी इतनी थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, जिससे कि कुएं को डिग करने में, खोदने में आसानी हो। Well irrigation is concentrated mainly in the northern place, and that includes states such as Punjab and Uttar Pradesh. Okay, now wells are the simplest and the cheapest forms of irrigation. This is important because आपको कभी-कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि wells, why were wells or why are wells still considered a very popular form of providing irrigation to the agricultural operations, right? So in that case, the first reason of course is this, that if it states like in North India, you would find it easier because the soil quality is suitable. Number two, it is the simplest and the cheapest source of providing irrigation because wells can be dug at any convenient place. It's an independent source of irrigation and it can be used as and when the necessity arises. Okay, so wells are important and you need to know its advantages. इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपसे एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है 2 मार्क के प्रश्न में। बट वेल्स ड्राई अप ड्यूरिंग द ड्राई समर्स, ऑब्वियसली जब काफी गर्मी पड़ती है, गर्मी के महीनों में, अप्रैल और मई के महीनों में काफी सारे कुएं सूख जाते हैं, पानी बिल्कुल नीचे तक सूख जाता है, तो उस केस में ऑब्वियसली आपके कृषि को भी पानी नहीं मिलेगा, आपके पीने का पानी भी कहीं कहीं कुएं सूख जाते हैं तो नहीं मिलता है। सो बट वेल्स ड्राई अप ड्यूरिंग द ड्राई समर्स एंड फेल टू प्रोवाइड वाटर व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट। ए वेल कैन वाटर ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड, दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज। It can water only a limited amount of land, about 1 to 2 hectares, okay, depending on the size of the well and the depth of the well. Okay, it is also time consuming because ज़्यादातर ये manually किया जाता है। और another drawback of well water is that in many parts it provides for brackish water, यानी कि नमकीन पानी, यानी कि salty water comes out in many of the wells where if the quality of the groundwater is not great. तो आपको समझ में आ गया 3 प्रमुख डिसएडवांटेजेस हैं, 2 एडवांटेजेस हैं वेल्स के। वेल्स के ऑफ कोर्स सिंपलेस्ट है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है और डिपेंडिंग ऑन द सॉइल क्वालिटी स्पेशली इन द नॉर्दर्न प्लेस इसको डिग किया जा सकता है। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस भी 3 मैंने आपको गिना दी हैं। ये आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे बिकॉज दिस कैन कम एज अ शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं टैंक इरिगेशन की तरफ। नाउ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग अर्दन और मेसनरी वॉल्स। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके लिए आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे ताकि एक तरह से एक दीवार की तरह बनाए जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जा सके। नाउ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग अर्दन और मेसनरी वॉल्स अक्रॉस ए स्ट्रीम और डिप्रेशन। रेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन कलेक्ट्स हियर एंड इट इज देन यूज्ड व्हेन नीडेड स्पेशली इन द ड्राई सीजन। सो वर्षा ऋतु के दौरान जब भी पानी गिरे, जब भी वर्षा गिरे तो उसको वेस्ट नहीं जाने दिया जाता, इस पूरे टैंक में उस पानी को भरा जाता है। और उसके बाद गर्मी के महीनों में जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए सितंबर में, उसके बाद इसी पानी का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता है। Now rainwater during the rainy season collects here and it is often used when needed during the dry season. Now tank irrigation is popular especially in the Deccan Plateau, यानी कि जैसे मैंने कहा नॉर्दर्न कर्नाटका, तेलंगाना के राज्यों में जहां पर की जो भूमि है एक तरह से रॉकी टेरेन है। ओके, it's a rocky terrain, and other states where tanks are also an important source of irrigation is Karnataka, Bihar, Bengal and Orissa. But प्रमुख तौर पे ये नॉर्दर्न कर्नाटका और तेलंगाना के राज्यों में, आंध्र प्रदेश में भी the tank irrigation is very popular, and tank irrigation is important in the Deccan Peninsula because of the following reasons. This is also an important question. आपको भी इसके भी आपको कारण याद करने पड़ेंगे। ओके, थोड़ा सा रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आप समझ लेंगे तो आपको इसको एक तरह से स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा कि इन कारणों को कैसे याद करें। समझ लीजिए, बाकी सब एवरीथिंग इज ए केक वॉक। ओके,
नाउ द हार्ड रॉक्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे काफी रॉकी स्तर रहता है, इट्स वेरी रॉकी टेरेन. नाउ द हार्ड रॉक्स अंडरलाइंग लार्ज एरियाज इन द डेक्कन प्लेटू डू नॉट अलाउ द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इजिली. तो एक तरह से जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो एक तरह से पानी सीधा सीप करके नीचे नहीं जाता, बिकॉज देयर इज अ रॉकी टेरेन इन द डेक्कन प्लेटू. The undulating surfaces, और चूंकि काफी सारे रॉकी surfaces है, so it's a slightly uneven kind of surface, so they form natural depressions. Okay, so there will be a rock and then there will be a natural kind of a depression. उसको भी टैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. So these hollows may have a simple dam across them. Thus tanks are simple and easy and cheap to build. तो उसमें ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. अगर there is a natural depression जहां पर water collects, you just have to build a wall around it and that becomes your टैंक इरिगेशन. सो पहले के समय में इस तरह के काफी सारे टैंक इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया, और खास तौर पर तेलंगाना जो हैदराबाद स्टेट था निजाम के टाइम के दौरान, वहां उस दौरान टैंक इरिगेशन वाज अ वेरी वेल laid out machinery, and one tank water used to actually connect to another tank, so you could actually have a system of tank irrigation which were kind of connected to each other as well. Okay, so one water will flow into the other, so it will almost be like an artificial river which was created during the times of the Nizam. Of course, in modern days many of those tanks have been destroyed or taken over by land encroachers. Okay, many streams have abundant water, okay, only during the rainy season but dry up when the rains ease. Obviously many जो तालाब होते हैं या lakes होते हैं या छोटी नदियां होती हैं, obviously they dry up during the dry season. Tanks enable people to store this water which otherwise would have flowed out uselessly. जैसे मैंने कहा, टैंक्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं, instead of if it is only in the river where it will keep flowing and dry up during the summers, whereas this one will actually be some kind of a storage. Of course there will be natural evaporation will take place, but largely the water will get stored and can be used during the summer months. Chautha, tanks also help in raising the underground water levels of wells found in the surrounding areas, and this is important. अब जैसे यहाँ पे एक टैंक है and the water will gradually seep in, it will actually increase the groundwater level and that will help any of the wells जो साथ में पास के गांवों में कोई कुएं वगैरह लगाए हैं, तो उनका भी पानी का स्तर ऊपर आता है. So it helps the general groundwater table level in the surrounding areas. And apart from irrigation, in many villages tanks form the only source of water for domestic purpose. कि घर के काम आने वाला पानी भी mostly it is provided with the help of tanks only. Now टैंक्स के however apart from these 5 advantages जो मैंने आपके लिए गिनाए, इसके साथ साथ थोड़े ड्रॉबैक्स, थोड़े नेगेटिव्स भी हैं. Now when you are especially comparing it with the wells, tanks occupy large surface area, which is very obvious. It's not as small and compact as a well. Tanks will be over a large surface area, so which could otherwise be used for cultivation. That is one area, but if it is really found in the rocky terrain, it's not necessary that it can be used for cultivation also, but this is one disadvantage which has been mentioned. Now many tanks dry up during the dry season also. Evaporation की वजह से even tanks can dry up and they can fail to provide water for irrigation when it is actually required the most. Okay, and silting of tanks is a problem, and this is a genuine problem. The silting of tanks, because नीचे मट्टी जम जाती है तो उसको साफ करने की भी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, and desilting of these tanks is often required. तो एक तरह से मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है as far as these tanks are concerned. So ये तो हो गया as far as the canals are concerned. पहले हमने wells की बात कर ली, टैंक्स की बात कर ली, और तीसरा प्रिमिटिव सोर्स ऑफ इरिगेशन अब हम आते हैं inundation canals के ऊपर. Now these canals are called the flood water canals, and this is very important and very interesting also. Okay, because for you who are very largely, I would consider, I may be wrong, urban students who are not exposed to a rural way of life, this is all very interesting about how different ways of irrigation were kind of invented, developed in order to ensure that you have a water supply for 12 months a year and not just the 4 months when it is raining. So in that sense, this kind of information is very interesting, and that's how I would want you to look at geography, approach geography. Don't look at it only from the examination point of view, look at it also from an information point of view कि आपको किसी तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है कि किस तरह से पहले के लोग पानी का उपयोग करते थे ताकि उसको स्टोर कर सके और बाद में उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सके.
So these canals are called flood water canals. Okay, why flood water canals? Flood water means बाढ़ का पानी, and have water in them only when the river is flooded during the rainy season. So जब बारिश होती है वर्षा ऋतु में काफी सारे राज्यों में हमने देखा है कि बाढ़ आती है, साउथ में कृष्णा नदी हो या गोदावरी नदी हो या नॉर्थ में गंगा हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, तो काफी प्रदेशों में जो 4 महीने हैं 5 महीने हैं उस दौरान काफी प्रदेशों में बाढ़ भी आती है। अब उसके लिए क्या किया गया कि फ्लड कैनाल्स का प्रावधान किया गया। नाउ व्हाट आर फ्लड कैनाल्स? नाउ फ्लड कैनाल्स हैव वाटर इन देम ओनली व्हेन द रिवर इज फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कैसे? एंड these canals are taken out from the rivers without the regulating systems like weirs at this head. So कोई कंट्रोल नहीं है। So basically what happens is that there are these flood canals. So जब भी पानी का स्तर ऊपर हो जाए, so that water will overflow into the flood canals and stay there. Okay, and stay there. So it's almost like कि एक बड़ा पतीला है, वो it kind of overflows and then it starts filling up another small tub or something which has been kept around it or underneath it, and it keeps flowing it and the water will start filling in the tub, so that the main vessel is getting full, but the overflowing water is falling into the tub, so your water is not going waste and it is getting stored in the tub. Similar principle is that of a flood water canal, but this thing is that there is no regulation for these kind of canals, flood water canals. So it's just another kind of a passage, and it's almost like a stepney which has been created for a river. However, many inundation canals are being converted into perennial canals. हो सकता है कि अगर उसमें पानी रहे और सूखे नहीं, so it can be used later on during the non-monsoon season, and many of them are found near the river Satluj in Punjab, and which has high floods during the rainy season. तो ये तो हो गया as far as the first part in which we have looked at the primitive methods of irrigation are concerned. In part 2 of the chapter on water resources, we will look at the modern methods, which is about how to judiciously use water to avoid wastage of water due to evaporation, due to general wastage of water leakage when it is going from point A to point B. उसका कैसे होता है, and how do these score over the primitive methods and why are these being embraced more and more. इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी नजर डालेंगे। आपके शहरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर एक तरह से एम्फेसिस दिया गया होगा कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वेस्ट कीजिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ वाटर भी हो सके। तो दैट वी विल स्टडी इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर ऑन वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।